नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के परीक्षा बैंक के बायोलॉजी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis is a form of reproduction in which egg can develop directly into an embryo without the fertilization. It means the embryo is formed without the fertilization by the sperm. Parthenogenesis help in determining the sex of an individual in honey, bees and the wasps or etc. इट सपोर्ट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोमल थ्योरी होती है इनहेरिटेंस की, इसे सपोर्ट करता है। वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एलिमिनेटेड बाय द पार्थिनोजेनेसिस। इट इज द सिंपलेस्ट, मोस्ट स्टेबल एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे सिंपल मेथड होती है जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और यह इसके सारे सिग्निफिकेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज पॉली एम्ब्रोनी। पॉली का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे, और एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। तो जब भी किसी भी प्लांट के अंदर बहुत सारे भ्रूण से बनेंगे, भ्रूण का निर्माण होगा, उसे हम पॉली एम्ब्रोनी कहते हैं। अ कंडीशन इन विच टू और मोर एम्ब्रियो डेवलप्ड फॉर अ सिंगल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फॉर्मिंग what in human is known as the identical twins। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसे हम ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। अ कॉमन फिनोनिमा इन मेनी प्लांट, एनिमल एंड स्पीसीज, polyembryony occurs regularly in the nine-banded armadillo, which usually gives birth of 4 identical youngs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, what is fertilization। The fertilization is the process of combining of male gametes or sperm with the female gametes or ova, and they fertilize and they form the zygote. This process is known as the fertilization। Next question देखते हैं दोस्तों, what is the basic role of the tapetum। तो टेपिटम का इंपॉर्टेंस क्या होता है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो टेपिटम होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है आपके एंथर वॉल की, जो सराउंडेड होती है स्पोरेंजेनेसिस टिश्यू से। ये जो टिश्यू होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलन के डेवलपमेंट में और उसके नरिशमेंट में, जो कि माइक्रोस्कोप में फॉर्मेशन एक्साइन होते हैं। एट द फाइनल स्टेज द पोलन मैच्योरेशन, द टेपिटल पोडक्ट्स take part in the deposition of triphyline pollen kit। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेक्युलेशन। इमेक्युलेशन इज अ प्रोसेस द रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर और किलिंग अ पोलन फ्रॉम अ फ्लावर विदाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म known as the immaculation। In a bisexual plant, immaculation is essential for the prevention of self-pollination। In the monoecious plant, the male flower are removed। यहाँ पर हम मेल जो प्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम इमेक्युलेशन के नाम से जानते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद द नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 cell and 8 nucleus center state of female gametophyte। The 8 nucleate female gametophyte of flowering plant having an egg apparatus made up of 1 egg cell and 2 flanked cell in micropyllid। The flanking cell are known as the synergid and have a finger-like structure projection of the veil from filiform aperture। 3 cells present at the end of the chalazion and the embryonic is called the antipodal end, and the center 2 polar nuclei are present। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें
तो इस तरह से आपका ये सेल होगा, यहाँ पर 3 सेल होंगे, इसी प्रकार नीचे भी 3 सेल होंगे, और बीच में आपके 2 सेल होंगे जो कि फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 सेल, यहाँ पर 3 सेल, टोटल होगा 6 सेल, और एक सेल ये फॉर्म करेगा, बट इसका न्यूक्लियस अभी भी सेपरेटेड है। तो यहाँ पर एक सेल हो जाएगा, तो टोटल सेल हो जाएंगे आपके 7। बट जो चेलेजा एंड और एंटीपोडल एंड है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होंगे वो 8 होंगे। 3 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे, और ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। पर सेल कितने हैं यहाँ पर? 7, जिसी को हम 7 सेल 8 न्यूक्लियस नेचर स्टड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? त्रिसलियन किसे कहते हैं? द ट्रिपल फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट without 2 polar nuclei inside the embryo sac in angiosperm. The other male gamete fused with the 2 polar nuclei present in the center of the cell and the tripodal primary endosperm nucleus are present. अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करें, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें एम्ब्रियो सेक ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन and the 2 polar nuclei are present with the male gametes are involved in this process. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एपोमिक्सिस? इट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन. It is a kind of asexual reproduction which mimics asexual reproduction where the female gametophyte of the ovules in a flower directly developed into the embryo skip the process of the meiosis and the syngamy. Thus, Apomaximus produce a clone progeny with the maternal genotype. The highly importance of this Apomaxis is it produces the seed progeny with exactly the same as the mother plant. Thus, Apomax help in the preservation of a good characteristics of the generation of clove plant. It also help in the production of hybrid seed and the combination of desired characteristics that we want. It is also prevents the loss of the specific characteristics of the hybrid plant. It also helps in the cost effectively and the time effectively production of seed. Next question, what is micropropagation? Micropropagation is an artificial process of production of plant vegetably through tissue culture or a cell structure technique. In this artificial process of the propagation, the plants are produced in vitro by the asexual means of reproduction by the vegetative propagation. The plant can produce both asexually and the sexually, that is via the vegetative part, and the multiplication or the sexually. The seed production once of the mean of the asexual reproduction by the multiplying of genetic replication of plant, that is refers to a clonal propagation when the plant can populated from a single individual through the asexual means of reproduction. For the in vivo propagation, the specific plant asexual reproduction via the multiplication of the vegetative parts is only shortest since they do not generate the function of the seed as seen. The grapes, bananas, etc. are their example. The successive application of the clone propagation to the following observation like a potato, apple and the many other ornaments plant, they do that reaction. तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी का चैप्टर 2 खत्म होता है, परीक्षा बेग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।